Hello students and welcome to this video wherein I'll be solving mock 1 questions as far as VARC is concerned. So I'm sure during the analysis there'll be many learnings for you guys when it comes to how many questions we need to attempt and what all questions we need to attempt and what exactly was the difficulty level as far as passages are concerned, as far as questions are concerned, where we got stuck and which are those questions which needs to be left out or which on which we should not attempt those questions wherein negative marking aa sakta tha. So all those things we have discussed in the analysis today. Now in this particular video I am just solving those questions for you guys because कई बार ये dilemma रहता है कि there are some concerns related to options specifically as far as verbal is concerned. Why not 2 or why 3 or why not 1, why 4? So all these things we'll be discussing in this particular video. So it will give you a detailed solution with reasoning that what exactly and what should be the approach while solving VARC section. So let's start with passage 1. So as in the case of actual CAT passages, actual CAT paper, it starts with reading comprehension followed up by verbal ability questions wherein you have para jumbles, para summary, odd sentence para jumbles as well. So the passage 1, it was typically 515 odd words, now which is the case when we are talking about 2 hours examination or a 40-minute section as far as verbal ability is concerned. The genre was economy and the source from which this passage was taken was Guardian, and passage was talking about European economy. Uske upar ye passage tha, and to be honest with you, the passage was easy, and student who are preparing for CAT and or CAT aspirant जो कि management exams के लिए aspire कर रहा है, they should be well versed with jargons like this because it was not a difficult passage overall. ठीक है? So let's see the passage now. So passage क्या बोल रहा था? The European economy is in the doldrums, right? So there is some problem which is going on with the European economy. I'll just try to mark the keywords which was very important, and as I always say, first paragraph will give you the crux of what exactly the passage is talking about. So the passage is talking about European economies in the doldrums. यहाँ से author शुरू कर रहा है. The countries on the periphery of Europe, the countries on the periphery are already threatened by sky-high youth unemployment, stricken banking systems, and economic stagnation, all before a possible breakup of the euro that would make matters still worse. So here author is now to support this author will give its arguments that why he is talking about that the European economy is in the doldrums. The first thing what they are talking about is the countries on the periphery, they have a problem, and that too even अभी तक तो euro breakup हुआ भी नहीं है. जब euro breakup होगा तो matter और भी ज़्यादा worse हो जाएंगे. ठीक है? Even countries at the center. So abhi we are talking about the countries at the periphery. Now we are talking about the countries at the center. They are being affected by the loss of confidence and fear of the future. So the confidence is not there, and so as there is a fear of future as well. What we need now, author यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर रहा है. ऑथर यहां से थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, that what all things needs to be done at this point of time, right? That's what author is suggesting, advising. So what we need from European leaders and policymakers now, he's talking about we want some initiative to be done, not just to stabilize the euro. So euro को stabilize करना is one part of the story. It is required for sure, but along with this there are certain other things which needs to be taken care of. But to use the opportunity to recast the whole framework of economic policy. So what we need to do is we have to restructure the whole framework of economic policy, because that is something which is the need of an hour, so that it permits member state to put their public balance sheet behind their banking systems, reframe innovation and investment policy, and redesign their social contracts so that they offer crucial security but also more flexibility. This is a moment to act.
right? So the first paragraph, important keywords, the European economy is in the doldrums, the countries at the center, so as in the periphery, they both are facing some problem, they have their different problem, and then author is suggesting it's time to take initiatives, it's time to act. That's it, first paragraph over. These are the keywords. Second, perhaps the worst part of the current crisis is the way it is killing faith in the union, in the European integration. Now, a very important thing, अभी तक तो author बोल रहा था that European economy के बारे में it is something, there is a problem there, what can be the solution, and important part what he is saying is because of this हमारे पास सबसे important problem आ रही है कि हमारा जो faith था of a integrated Europe or a common Europe, that is what वहां पर problem आना शुरू हो गई है. It's killing the faith in the European integration. The idea that Europeans acting in concert can make their economies and societies stronger rather than weaker seems to have lost its force. So जो हम यूरोपियन, उसी चीज को इसने पैराफ्रेज करके वापस लिखा है, उसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया है कि now that faith is slowly and gradually going down. ठीक है? Political leaders in both France and Germany genuflect to the idea of more Europe. So genuflect का मतलब होता है घुटने टेक देना, right? You are going down to something. So बोल रहा है जर्मनी और फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो घुटने टेक चुके हैं. Okay, they want more Europe. They are accepting this fact, but with no agreement about what more Europe could mean. What exactly do you mean by more Europe? There is no clear directions on that. Okay, they are accepting the idea, but how? They don't know. ठीक है? There is well-meaning intent, but no intellectual content. Intention है, meaning पता है, but कैसे होगा? I don't know. ठीक है? But no intellectual content that goes beyond national agendas. National agendas से beyond किस तरीके से होगा? We don't know. In Germany, अब वो आगे explain कर रहा है. In Germany, the well-known commitment to budgetary discipline. So we are talking about first. जर्मनी के अंदर एक कमिटमेंट है क्या कि उन्हें बजटरी को लेके दे हैव टू बी डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू प्रोबेबली बजट और स्पेंडिंग ऑफ दिस थिंग money. In France, under its new leadership, to government-inspired growth. So we are talking about growth, and that should be inspired by government. So one, they are talking about budgetary discipline, और दूसरा growth की बात कर रहा है. What is needed? अब ये दोनों के national agendas है. वो क्या बोल रहा था? इंटेलेक्चुअल कंटेंट दैट गोज बियॉन्ड नेशनल एजेंडाज. दोनों अपने अपने इंटरनल नेशनल एजेंडाज के ऊपर बात कर रहे हैं, बट देयर इज नो कॉमन इंटेंट व्हिच इज गोइंग ऑन. सो व्हाट इज नीडेड इज अ कॉमन एनालिसिस ड्रिवन बाय प्रैक्टिकल रियलिटीज and intellectual energy, some joint giving of ground, and then decisive action in the name of Europe. So what you need to do is you need to come out from your national agendas, get into some common analysis, and then take the decisive action. That's what the point is talking about. So first, European, again, I am repeating, the first paragraph is talking about European economies in the doldrum. There is a problem there. Second, due to that, we are now talking about there is some faith which is killing as far as European integration is concerned. Let's see paragraph 3. First, now again वो बोल रहा है इन दोनों को क्या करना चाहिए. Again, author is trying to advise something. First, Germany must begin to recognize that asking all Eurozone countries to commit to incredible economic policies, especially in the wake of financial crisis and overhang of enormous private debt is simply incredible. Now, incredible का मतलब यहाँ पर जो use हुआ है, it is something which is not acceptable, it is something which is not good, not believable. वो बोल रहा है अगर जर्मनी चाहती है सारी यूरोपियन कंट्रीज को कि आप इन इकोनॉमीज इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी country has their own problem, right? और then too when the financial crisis is happening, तो आपको और जब private debt इतना ज्यादा है, you can't tell all the countries to accept the policies which Germany is talking about. And what Germany is talking about, they are talking about a budgetary discipline. Not possible. Second, financial market do not believe that Greece can stay in the euro. अब financial market को believe नहीं हो रहा है कि ग्रीस यूरो में stay कर पाएगा if the price is mass unemployment and privatization. Even if to a degree that Greeks are the architect of their own ruin. So what they are saying is financial markets, again, they are not accepting
वो क्यों बोल रहा है कि जर्मनी को नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट कि हर बंदा आपके हिसाब से नहीं चल सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ग्रीस प्रोबेबली वोंट बी एबल टू डू दैट। उसका रीजन प्रोबेबली इज कि उसने शायद खुद ही अपना फेट लिखा हो, दैट्स व्हाट सम थिंग्स व्हिच दे माइट हैव डन इन द पास्ट व्हिच इज नॉट मेंशन्ड हियर। Nor do they believe that even Spain can if solve its banking crisis with no support from rest of Europe. Again, स्पेन का भी प्रॉब्लम वही है कि उसने भी शायद अपना एक फेट खुद लिखा है। अगेन स्पेन भी शायद नहीं उभर पाएगा एंड क्रेडिबिलिटी इज नॉट सर्व्ड बाय इनक्रेडिबल पॉलिसीज, सो यू कांट serve the credibility. They are pointing to Germany, so you can't do that. And there is something, there is faith which is missing in all Euro countries when you try to apply your policies to the rest of Europe. This is what author was saying to Germany. Next, begin with Eurozone rules. One of the follies of American neo. Now understand here वो क्या बोलना चाह रहा था। अगर हम यूरोजोन रूल्स की बात करते हैं, पूरा यूरोप का जोन इज यूरोजोन। One of the follies of American non-conservatism was the proposition that capitalist economy and business could manage existential risk without the support of the government. So this is what author is saying, एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा folly बोल रहे हैं, बहुत बड़ी गलती जो अमेरिकन नियो कंजर्वेटिव, जो नए तरीके के कंजर्वेटिव लोग हैं, when this ideology they are talking about, this ideology has a problem कि without the government support कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी एंड बिजनेसेस ये सारा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क हियर एज फार एज दिस आइडियोलॉजी इज कंसर्न्ड एज पर ऑथर। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग एज पर ऑथर, ठीक है। आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस वी नो डिफरेंटली the long standing European view that business and state का मतलब यहां क्या है, गवर्नमेंट, they are codependent and has been proved wholly right. So यहां पर ऑथर अमेरिका की इस आइडियोलॉजी को क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि एटलीस्ट यहां पर जो यूरोजोन के अंदर चीजें चल रही हैं, दैट इज राइट बिकॉज यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन द ओनली कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी, राइट। इफ द यूरोजोन इज गोइंग टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलरिटीज ऑफ यूरोपियन कैपिटलिज्म, अगर वो बोल रहा है यूरोजोन भी अब यूरोपियन कैपिटलिज्म, यूरोपियन काइंड ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर अगर जाएगा, उसको क्या परमिट करना चाहिए? इट हैज टू परमिट स्टेट्स अ डिग्री ऑफ फ्रीडम टू यूज देयर बैलेंस शीट एंड देयर टैक्स बेस टू को जनरेट वेल्थ। सो अब इनको क्या करना पड़ेगा? स्टेट्स, गवर्नमेंट को बेसिकली फ्रीडम देनी पड़ेगी, वो किस तरीके से प्राइवेट के साथ जनरेट कर सकते हैं वेल्थ को। इंस्टेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मन डिजायर टू इम्पोज डिसिप्लिन, जर्मनी क्या चाह रहा था? मुझे बजटरी डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। अक्रॉस अ कंटिनेंट इज fusing with American neoconservatism notion that nothing more needed to stimulate enterprise than a free market and a minimal space state. So अब वो बोल रहा है कि अब ये जो नई डायरेक्शंस जो जर्मनी चाह रहा है वो इसी तरीके से पॉसिबल है। हम अमेरिकन नियो कंजर्वेटिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फॉली था। नाउ जर्मनी इज ट्राइंग टू रादर गेटिंग इनटू दिस, रादर व्हाट इज नीडेड is the creation of 21st century social market economy in every member country but respecting its particular institution. So what author is cautioning here is please don't go with that, right? The steps which you are taking is taking you towards the neoconservatism ideology. Rather, what you need is a socialist kind of economy, but then you should also consider every member, every country which are there in Europe. So that's what the passage is talking about. It's a kind of cautioning, advising what author is doing. ठीक है, सो ये पैसेज बोलना चाह रहा था, पैसेज नंबर 1. एज आई सेड द पैसेज वाज इजी, हमने एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी बात करी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. व्हाट वर द क्वेश्चंस एंड हाउ यू शुड एलिमिनेट द ऑप्शंस एज वेल. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 वाज टॉकिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज. एंड मैं हमेशा बोलता हूं प्राइमरी पर्पस इज समथिंग व्हिच इज सबसे ज्यादा आपका जो ब्रॉड ऑप्शन होगा वो आपका प्राइमरी पर्पस होगा. ठीक है, लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? टू सजेस्ट दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोजोन मस्ट वर्क टुगेदर टू ओवरकम द करंट यूरोपियन इकोनॉमिक क्राइसिस. सारी कंट्रीज को यूरोजोन की वर्क करना चाहिए टू ओवरकम द करंट यूरोपियन इकोनॉमिक क्राइसिस. लेट्स से ओके, मेरा ये आंसर हो सकता है. आई एम नॉट निगेटिंग द फैक्ट, अभी मैं कुछ निगेट नहीं कर रहा हूं. लेट्स से हो सकता है. लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 2. टू पॉइंट आउट
that the European economy is in trouble and suggest ways in which it could be helped. Again, मेरा ये आंसर भी हो सकता है, बिल्कुल ये मेरा आंसर हो सकता है, right? That's what the author is trying right from the first paragraph till third, to show how the current troubles in the eurozone are adversely affecting the notion of European integration. Now that is a very narrow option. Now that is very narrow option because it was not the main primary purpose. The primary purpose was, hello, Europe is in the problem. It was a result of that. It was a result of that, one of the after effects of that, right? So it was affecting the notion of European integration. So that is something, and plus the point is, it is one of the things, not the primary purpose. और अब तुम बोल सकते हो सर प्राइमरी पर्पस ये तो हाई टू शो द हाउ करंट ट्रबल इज इन द यूरोजोन, यस, बट देन दिस वाज नॉट द प्राइमरी पर्पस. ये वाला जो लाइन है, इट इज अफेक्टिंग द नोशन ऑफ द यूरोपियन इंटीग्रेशन, दैट वाज नॉट द प्राइमरी पर्पस. स्टिल लेट्स कम टू ऑप्शन नंबर 4. टू कंटेंट दैट द प्रॉब्लम्स दैट द यूरोपियन इकोनॉमी इज फेसिंग कैन नॉट बी सॉल्व. सो दिस इज वेयर इट इज टू एक्सट्रीम. दिस इज वेयर इट इज टू एक्सट्रीम. कहीं पर भी पैसेज में नहीं लिखा गया है कैन नॉट बी सॉल्व. उन्होंने बोला था इट इज वन ऑफ द फॉलीज ऑफ अमेरिकन नियो कंजर्वेटिज्म, हमें नहीं जाना चाहिए. कैन नॉट बी सॉल्व, टू एक्सट्रीम. तो पहला ऑप्शन जो मैं एलिमिनेट करूंगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. वी आर टॉकिंग अबाउट कैन नॉट बी सॉल्व. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है. नाउ इन ऑप्शन नंबर 1 देयर इज अ प्रॉब्लम. वो क्या बोलना चाह रहा है? All the countries of Eurozone must work together, right? So पहली बात, that is too extreme. पहली बात, it is too extreme. That's point number 1. दूसरा, to overcome the current economic crisis. Overcome हो ही जाएगा. Must work together to overcome. मतलब author is a kind of what I would say, he is a foreteller. राइट, वो बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा. दैट्स व्हाई फर्स्ट इज टू एक्सट्रीम. तीन चीजें इसके अंदर प्रॉब्लम थी. ऑल द कंट्रीज, दैट्स पॉइंट नंबर 1. सॉरी, ऑल द कंट्रीज, दैट्स पॉइंट नंबर 1 वेयर इज अ प्रॉब्लम. मस्ट, पॉइंट नंबर 2 वेयर इट इज अ प्रॉब्लम. ओवरकम हो ही जाएगा, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई आई विल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1 एज वेल. सो ऑप्शन नंबर 1 आई विल एलिमिनेट. दैट्स हाउ आई विल एलिमिनेट. एंड फोर्थ के अंदर एज आई सेड दैट यूरोपियन इंटीग्रेशन वाज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब सेकंड देखो मैंने क्या बोला था, सबसे ब्रॉड लाइन, द पॉइंट आउट. पहला उसने पॉइंट आउट क्या किया? यूरोपियन इकोनॉमी इज इन द ट्रबल. यूरोपियन इकोनॉमी ट्रबल के अंदर है, जो कि यहां पर के अंदर भी दिया हुआ था, बट यहां पर वो बोल रहा था इन द यूरोजोन. ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब वो बोल रहा है टू शो हाउ इट इज अफेक्टिंग दिस. उसने ये भी बोला है कि क्या क्या वेज दिए जा सकते हैं सो दैट इट कुड बी हेल्प. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उन्होंने जो बात करी है वो उन्होंने यही की थी कि ये हेल्प किस तरीके से करेगा. उसने पूरे सारे पैराग्राफ के अंदर उस चीजों पे बात करी है. एंड दैट्स द रीजन गाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. That's the reason option number 2 is the right answer. कि आपको यहां से ये पता लग रहा था, just a minute, या आपको सबसे ज्यादा जो ब्रॉड लाइन है वो लग रहा था ऑप्शन नंबर 2, and that's why we'll mark option number 2 as the right answer. So this would be the right answer and the reason I have just mentioned. Let's move on to question number 2. Okay, question number 2 क्या बोल रहा था मैं यहां पर? Which of the following best describe the content and organization of the passage. ठीक है. Okay, let's see organization किस तरीके से था और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट थे. Let's go to option number 1. The author is trying to logically, obviously it was done there, make a point, okay, and on an issue, and is presenting arguments and counter arguments for the same. So he's making the arguments when he's talking about how it can be solved, why it is in trouble. So why Europe is in trouble, how it can be solved, how, and the counter argument is when Germany is trying to get into, let's say, the policies which Germany want to impose on all the European countries,
then author is making a counter argument according to that. So all these things can be logically deduced. So option number 1 can be, right, can be a good candidate to have a answer as option number 1. Option number 2, the author is trying to present his view on an issue or a situation by recounting his पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एलियन ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये शायद आपने सबसे पहले एलिमिनेट किया होगा. द ऑथर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और एनालाइज अ कंसेप्ट और अ पॉइंट ऑफ व्यू. आई विल कम टू दैट. ठीक है. द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग, इवेंट और एन आइडिया. नाउ लेट्स एलिमिनेट वन बाय वन. सो दिस पैसेज वाज ओपिनियनेटेड. ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा था. अगर तुम ऑप्शन नंबर 4 मार्क करते हो, सो दिस इज न्यूट्रल. दिस इज न्यूट्रल बिकॉज ऑथर सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो अपना ज्ञान भी बांट रहा है, प्रेस्क्राइब भी कर रहा है. सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो उसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट भी पेश कर रहा है अबाउट अ थिंग, इवेंट और एन आइडिया. ठीक है. सो माय 4th ऑप्शन एलिमिनेटेड, माय 6th ऑप्शन एलिमिनेटेड. नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 where all the confusion was there. So what 3 is saying is the author is trying to understand or analyze a concept or a point of view. Again, author is just trying to understand. It will be too neutral. It will be very neutral, guys. It will be very neutral. Author is trying to make a point here. Author is trying to make a point here. जब author अपने argument देगा, counter argument देगा, author का जो पूरा structure है, organization है passage का, वो opinionated होगा. And option 3 and option 4 are too neutral because यहाँ पर आप opinionated नहीं हो सकते और इसीलिए option number 1 जो है मेरा सही आंसर होगा. ठीक है. अगर आपको कहीं भी इश्यूज हो, कहीं पर भी डिस्कशन हो, लास्ट के अंदर मैं मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा. वहां पर मेरा ईमेल आईडी भी है. देयर आई हैव माय मोबाइल नंबर एज वेल. वी कैन डिस्कस, डिबेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड यू कैन जस्ट शेयर योर थॉट्स ऑन व्हाट्सएप एज वेल. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर कंसर्न. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टोन बेस्ड क्वेश्चन. राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन? सो ऑप्टिमिस्टिक इज पॉजिटिव. Nowhere we are talking about any positivism. Nowhere we are talking about any positivism till the time they are. And when we are talking about tone of the author, we have to see overall passage का tone. You can't just go कि last paragraph के अंदर ये लिखा हुआ है. We are talking about the overall tone of the author. Circumspect मतलब again वो देख रहा है. He is देख रहा है कि चारों तरफ क्या चल रहा है. अगर हम देख रहे हैं चारों तरफ क्या चल रहा है, again that's too neutral. That's too neutral. That's too neutral. Okay. Fine. Objective, again it's neutral. And then in third they are talking about it is persuasive tone. That's what Germany needs to do. That's what France needs to do. That's what overall European countries needs to do. He's trying to persuade, he's trying to convince that this is something which can be done for sure. So this is where persuasive would be the right answer for question number 3. And coming to the last question, which of the following option is true according to the passage? It was a fact based question और आपसे जो पूछा गया था कि इसके अंदर क्या ट्रू होगा और क्या नहीं होगा. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा था? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्ट्रिकन बैंकिंग सिस्टम आर मेकिंग मैटर वर्स फॉर ऑल. नो, इट वाज ओनली मेकिंग मैटर वर्स फॉर peripheral countries, not all. Right? Option eliminated, very broad. Second, France and Germany are the key players. I don't know. That's my dear students, our alien option. This is very broad option. Third, Europe should continue dependency on both state and businesses to manage risk. That's what author was talking about, that it was one of the American neoconservatism folly and Germany is trying to replicate the same, which Germany should not. Yes, it is true according to the passage. And moving on to the last option, European economy is in the doldrums. Okay, only because of the breakup of the euro. No, अभी तक तो वो आया ही नहीं है, उससे पहले यूरोपियन इकोनॉमी की हालत ऐसे हो गई है. And that's why not even fourth. So option number 3 is the right answer. So that's what I said, that passage 1 was slightly easier passage and that there to the questions as well. अगर आप आराम से उसको टाइम देके दे रहे हो तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आराम से 9 मार्क्स लेके आया जा सकता था. Moving on to passage number 2. Let's start. Okay, so I think I'll take time here to explain passage 2. I think पूरे RC के अंदर यही एक पैसेज था जिसने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान किया, नथिंग एल्स.
So let's see what this passage was all about. So the genre here is sociology, right? Typically again 500 odd words, ठीक है? And let's see how the passage was placed. And अगर किसी ने इस passage से start किया था, yes, there was a problem, right? You should not start with this particular passage. So let's go to passage number 2. The uniqueness of the Japanese character is the result of two seemingly contradictory forces. So बोल रहा है अगर तुम जापानीज कैरेक्टर की बात करोगे, there is something unique, and what is that unique? Because there are two forces contradicting with each other, and that's what the uniqueness is all about. The strength of the tradition, they are very much to their traditions, following their tradition. That's point number 1. And selective receptivity of foreign achievements and inventions. They are receptive. They accept foreign inventions and achievements, but then they are very selective in that, because they are recepting foreign achievements, foreign inventions, keeping in mind they are also traditionally very much strengthened, and these are the two contradictory forces which is unique to the Japanese character. That's what the passage was, or the first sentence was talking about. As early as 1860s, there were counter movements to the traditional orientation. वो क्या बोल रहा है? As early as 1860s, counter movements मतलब countering the movements, right? You are opposing some movements and to the traditional orientation. So there were traditional orientation, right? जब यहाँ हम बोल रहे हैं strength of the tradition first, then they are talking about receptive towards selective things, that is second. और वो बोल रहा है 1860s के अंदर क्या था, जो ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन है उसके अगेंस्ट के अंदर काउंटर मूवमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है? युकिची फुकुजावा, the most eloquent spokesperson, he is very eloquent, a good with speeches, a good orator probably, eloquent spokesman of Japan's enlightenment, claimed the Confucian civilization. Now what is this Confucian civilization? It's referred to a Chinese civilization wherein it says that an individual or a society should behave according to the moral values, according to what is right, what is wrong, and everyone should live in harmony. That's what the Confucian civilization is all about. So what they said was, the Confucian civilization of the East, when we're talking about, let's say, China, seems to me to lack two things possessed by Western civilization. Now, what he started comparing Eastern and Western civilization. And when he's saying that Eastern civilization के अंदर दो चीज जो है, that is missing. If I'm right, yeah, that is missing. Science in the material sphere. So what Eastern specialization is missing is in material sphere the importance of science. That's point number 1. Let's make it A. ये देखो, ये keywords आपको उस दिन भी डालने पड़ेंगे, because that is something which is very important. And sense of independence in the spiritual sphere. So there are two spheres which Eastern Confucian civilization is saying कि so science का importance, और दूसरा कि आपका independence जो spiritual sphere के अंदर है, that is something is lacking spiritual और science. आगे चलते हैं. Fukuzawa's great influence is found in the free and individualistic philosophy of the Education Code of 1872. Now, what they are trying to say is that you should be free and individualistic. Again, they are talking about your independency has to be there, which is missing in Eastern civilization. But he was not able to prevent the government. Very important line here, very important, right? Because ये inference based questions यहीं पर आते हैं, ठीक है? But he was not able to prevent the government, Japanese government, from turning back to the canons of Confucian thought in the imperial rescript of 1890. When the rescript was happening, when the ideologies are changing, when we are talking about 60s to 90s, वो बोल रहा है कि उसको Confucian thought अच्छी नहीं लगती थी, because वहां पर science sphere and spiritual sphere was missing. But despite of that, he was not able to convince the government to avoid that, because government was pro towards that. So that's what saying, not able to prevent the government from turning back. He was not able to do that. Another interlude of relative liberalism followed World War First. So पहला ही आ रहा था, उसके बाद वो बोल रहा है एक और इंटरल्यूड हुआ of relative liberalism. We are again talking about liberalization, जो वर्ल्ड वॉर के बाद फॉलो हुआ, when
the democratic idealism of President Woodrow Wilson had an important impact on Japanese intellectuals and especially student, right? Again यहाँ से liberalism और आना शुरू हुआ, जहां पर जो डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म था प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का, दे हैड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जापानीज के इंटेलेक्चुअल लोग और उसके अंदर स्पेशली स्टूडेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट वाज लीनियनिस्ट, लीनियन की बात कर रहा है वो, लीनियनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द 1917 Bolshevik revolution. Again in the early 1930s, nationalism and materialism become dominant, largely as a result of failing economic conditions. So they are talking about, धीरे धीरे भाई साहब बात कर रहे थे कंफ्यूजन थॉट्स की, वहां पर लिबरलिज्म नहीं था, धीरे धीरे लिबरलिज्म आना शुरू हुआ, धीरे धीरे चीजें चेंज होना शुरू हुई. दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड बाय द टाइम द अर्ली 1930s, जहां पर लेनिन वगैरह की बोल्शेविक रेवोल्यूशन वगैरह सब कुछ आना शुरू हुआ, ये सब आने के बाद अगेन नेशनलिज्म एंड मटेरियलिज्म, दे बिकेम मिलिटरिज्म, दे बिकेम डोमिनेंट. बिकॉज उसका रीजन क्या हुआ, उसका रीजन ये था बिकॉज इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन क्योंकि फेल होते जा रहे थे और इस वजह से ऑल दिस थिंग्स वर कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है, ओके. Following the end of the World War II, substantial changes were undertaken in Japan to liberate the individual. So again, बहुत steps लिए जा रहे थे again जापान को liberate करने के लिए from authoritarian restraints, जो कि क्या था, nationalism and militarism. The new democratic value system was accepted by many teachers, students, intellectuals, old liberals, but it was not immediately accepted by society as a whole. Japanese tradition were dominated by group values and notions of personal freedom, and individual rights were still unfamiliar. Again, we are talking about strength of the tradition. So the strength of the tradition was there. Then there were some students, some intellectuals, they were accepting, and that's what we are talking about, selective receptivity. ठीक है? Today, democratic processes are clearly evident in the widespread participation of Japanese people in social and political life. Now they have embraced this fact. Yet there is no universally accepted and stable value system. Despite of that, we are embracing the fact, despite of that, there is no common this thing doing that. Values are constantly modified by strong infusion of Western ideas. Now, what they are trying to say here is they are receptive. They are receptive because till now we are modifying the values on the basis of Western ideas, both democratic and Marxist. स्कूल टेक्स्ट बुक एक्सपाउंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं इक्वालिटी के बारे में, हायरार्की के बारे में, रैशनलिज्म के बारे में ओवर द ट्रेडिशन. बट इन प्रैक्टिस स्कूल में ये होता है, बट प्रैक्टिस के अंदर these values are often misinterpreted and distorted, particularly by the youth who translate the individualistic and humanistic goals of democracy into egoistic and materialistic ones. So that's the kind of play which is happening in the Western economy, especially they are talking about Japan, that कहाँ किस तरीके से it is unique. कई बार मतलब there is one part of the story when in the schools teachers, the textbooks are talking about something else. In practical, there is something else, right? So that's what it is very unique. Most Japanese people have consciously rejected Confucianism. Consciously rejected Confucianism, but vestige का मतलब होता है remaining part, but the vestiges of the old order remain. We are rejecting it, but then there are also vestige which is remaining. There are certain people or certain section of the society who is still accepting that. An important feature of relationship in many institutions, such as the political parties, large corporations, universal faculties, is the oyabun-kobun or a parent-child relation. So they still have the relationship of oyabun-kobun relationship. So वो क्या बोल रहा है? Oyabun-kobun is a parent-child relation. ठीक है? किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में, हायरार्की के बीच में, there is a relationship of a parent and a child relationship. How? A party leader to the supervisor. और सो पार्टी लीडर जो अपने नीचे लोगों को बात करेगा, सुपरवाइजर जो अगेन अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को बात करेगा, प्रोफेसर जो अपने स्टूडेंट्स को बात करेगा. सो दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, what they do is in return for a loyalty, whether it is a professor, whether it is a party leader or a supervisor, they protect the subordinate to him and take general responsibility for their interest.
throughout their entire lives. That's their responsibility. That's what they do. An obligation that sometimes even extend to arranging marriages, और इतना हद तक कि उनकी शादी तक करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग ले लेते हैं. The corresponding loyalty of the individual to his patron. Now the students to his teacher, the subordinate to his supervisor, or to the party leader, people to the party leader. What they do is the loyalty of the individual to his patron reinforces his allegiance to the group to which they both belong. So again, वो भी उसको रेसिप्रोकेट करता है because of his allegiance, वो उस ग्रुप से जुड़ा रहता है. A willingness to cooperate करेगा with other members of the group. That's the allegiance which he do, and to support without qualification the interest of the group in all its external relation is a still widely respected virtue. That's what the patron does to his subordinate or a leader. ठीक है? A willingness to cooperate with other members of the group and to support this is what the Oyabun Kobun creates ladders of mobility. Now what this Oyabun Kobun does, it create a ladders, how you move forward, how you move upward, for that matter, which an individual can ascend, वो ऊपर उठ सकता है, rising as far as abilities permit, जहां तक उसकी abilities permit करती हैं, so long as he maintains successful personal ties. अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे with the superior, the later requirement usually taking precedence over a need for exceptional competence. As a consequence, there is little horizontal relationship between people even with same profession. और इस ओयाबुन कोबुन स्ट्रक्चर से जो रिलेशनशिप है वो अपने सुपीरियर से अच्छा बन सकता है, बट अपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में जो सेम प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर क्रिएट नहीं होता है. दैट्स व्हाट द पैसेज वाज टॉकिंग अबाउट. So the uniqueness what Japanese culture has is one that they are very strict to their tradition. That's what they refer to in all the subsequent paragraph. And second, the uniqueness was that they are also selective, receptive to certain thoughts, at least on papers. That's what the passage was talking about. The words I think here and there were missing, but I mean here and there were difficult, but overall. Yes, it was time consuming. I'm not denying that fact. Let's move to the question. Question number 1. The author is mainly concerned with what? ठीक है सर, author mainly concerned था कि सर ये दोनों चीजें जो होती हैं वो किस तरीके से affect करती हैं, नहीं करती हैं कल्चर को. Let's see. Explaining the influence of, so mainly concerned, again it was more of a primary purpose of writing the passage. Right, that's what the question is all about. So explaining the influence of Confucianism on modern Japan. Okay, so they are saying that the main idea was Confucianism. I don't think so because main idea was something else, the first line of the paragraph. Second, analyzing the reasons for Japan's post-war economic success. Oops, alien option, eliminate this. Alien option, eliminate this. Discussing some important determinants of Japanese values can be the answer, because I have to mark the option which is too broad. So important determinants of Japanese values, and what are those? The selective receptivity and traditional values. Right, मेरा आंसर बिल्कुल हो सकता है. Fourth, describing managerial practices. Okay, that's too narrow. Contrasting modern with pre-war Japanese society. Again, alien. So we are only left with option number 3 as the right answer. Why not 1? Because again, that's too narrow as an option. That's too narrow. Can't be my answer, because this is where author was trying to explain, not the main idea as far as the passage is concerned. With this, let's move on to the next question. The next question was, which of the following is most likely the relationship of the Oyabun Kobun described in the passage? Oyabun क्या था? Parent था. Kobun क्या था? Child था. Let's start. Okay, political candidate and the voting public. Voting public has even far greater rights. If it was a political candidate, उसके नीचे subordinate होते तो शायद आंसर सही हो जाता. So आंसर गलत होगा. Gifted scientist and his protege, right? बिल्कुल हो सकता है ये आंसर. A scientist and his student, right? Two brothers who are partners in the business. They are partners. They share a equal this thing. Judge presiding at the trial of a criminal defendant. So
वो बोल रहा है जज जो कि ट्रायल पे है ऑफ अ क्रिमिनल डिफेंडेंट. अगेन that won't be the answer because the reason is we are talking about a judge and a criminal defendant जहां की उनका सेम लिंकेज है ही नहीं, राइट. सो सबऑर्डिनेट का पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए. लीडर ऑफ अ म्यूजिकल ensemble which is who is also a musician in the group. So again, he is also a musician within the group. Again, they don't share a ladder, so that's why not only fifth. So इसीलिए we'll mark option number second as the right answer. Here, moving on to the next question. The author implies that. Author is implying. So it was a inference-based question. It was an inference-based question. Let's see. Decision about the promotions are often based on personal feelings. Can be my answer. Can be my answer because उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ascend कैसे करते हो because there is a hierarchical relationship. That's what they are talking about. So can be my answer for sure. Let's see others option. Students and intellectuals do not understand the basic tenets of Western democracy. Again, हटा दो इसको, नहीं दिया हुआ है. Western values have completely overwhelmed tradition. No, no, no. That's too extreme. That's too extreme. They modify. Completely overwhelmed. No. Respect of authority was introduced into Japan following World War II. Again, no guys, no. Alien option. Most Japanese workers are member of a single political party. Again, that's an alien option. I'll mark option number 1 as the right answer. Okay? Okay, moving on to the next. Which of the following is most accurate description of the organization of the passage? How the passage is organized? That's what you need to answer. First, a sequence of inference in which the conclusion of each successive steps becomes a premise in the next argument. बहुत भारी भारी words use कर दिए. In short, मुझे एक बात बताओ. हम start हुए थे same चीज से, उसका हमने premise दिया in all the subsequent paragraph. We started off with the conclusion that this is what the uniqueness is, and then we followed up by the premises. और यहां क्या लिखा हुआ है? Conclusion of each successive step, it becomes a premise for the second. Sorry boss, it was not this thing, and it was not at all this thing because we started off with the conclusion for sure. A list of generalization, most of which are supported by only a single example. There are many examples given, guys. There are many examples given. How we can say that it was a single example? We are talking about books. We are talking about this parent-child relationship, Obun, Kabun, and all those things. Then we talked about World War. Then we talked about something else. So you can't say that. A chronological analysis of historical events leading up to a description of the current situation. बिल्कुल मेरा ये हो सकता है आंसर, हो सकता है because they started off with a chronological analysis that how it started. Then 1830s, 1860s, Obun Kabun, World War I, World War II. Yes, it can be my answer. A statement of commonly accepted theory that is then subjected to a critical analysis. A commonly accepted theory, nowhere it is mentioned that it was commonly accepted for sure. An introduction of a key term that is then defined by giving example. So बोला there was a key term which was then defined. ऊपर कोई टर्म नहीं दे रखा था. इट वॉज एन आइडिया, नॉट अ टर्म. अगर स्टार्ट करता लेट से ओबुन काबुन से, तब मैं शायद इसको आंसर मार्क कर देता. सो आई विल मार्क इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 एज द right answer. That's what, and that's the reason, guys. The whole purpose of recording this video is that you should know the reason that why the particular option is the right answer, at least according to me. Guys, let's move to the passage number 3. Okay, let's start with passage 3. So the passage 3, the source is polity. So polity was the source. It's not 60, it's 560. It's 560. So the passage was polity. So in this particular mock, to be honest with you, though the passages, I think it was easy to moderate, but what I've tried to what we have tried to do is we tried to come up with all those genres from which CAT take their passages at least, right? So polity, again, it's very dominant, it's very important as far as CAT is concerned. So here we are talking about the objective of India's development strategy. So they started off with, what is the objective of India's development strategy? Has been to establish a socialistic pattern of society. So this was the
developmental strategy, socialist pattern, everyone can be benefited. Through economic growth, किस तरीके से करेंगे आप? इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, और वो कैसे करेंगे? सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया, सब कुछ खुद करेंगे. ओके, सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस दिलाएंगे, एंड लोगों को गरीबी से बाहर लाएंगे. दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव वाज. These objectives were to be achieved within a democratic political framework. ये बहुत ही तरीके से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर होगा, यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ काम करेगी, आई मीन स्टेट्स एंड प्राइवेट बोथ काम करेंगे, फिर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट. India initiated planning for national economic development with the establishment of the Planning Commission. So, how it started off? It started off with planning of establishment of Planning Commission. The aim of the first 5-year plan. Now, what was the aim of first 5-year plan 51 to 56 is, now यहां से आप keywords को underline करना शुरू कर दीजिए. To raise domestic saving for growth, right? So आप domestic save करें ताकि आप growth के लिए आए, और उस जो आप सेव करेंगे उससे आप इकोनॉमी को वापस रखेंगे, वापस बढ़ाएंगे, जो कि इफेक्ट हुई है फ्रॉम कॉलोनियल रूल व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. The real break with the past in planning came with the second 5-year plan. So बोल रहा है रियल ब्रेक कब आया? फर्स्ट ईयर से इतना अच्छा नहीं हुआ, फर्स्ट 5-year प्लान से, सेकंड 5-year प्लान से, which was a Nehru-Mahalanobis plan. The industrial strategy articulated by Professor Mahalanobis placed emphasis on development of heavy industries and envisaged a dominant role for the public sector in the economy. इन्होंने क्या बोला कि भैया एक काम करो, ये जो आप ज्ञानबाजी कर रहे हो ऐसे नहीं होगा. ये क्या होगा कि आपको हेवी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ, प्रोडक्शन बढ़ा पाओ, सेविंग्स बढ़ा पाओ, whatsoever your objectives are. And the second is, due to that, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा? पब्लिक सेक्टर, which means when we are talking about PSUs, that's what the two things they talked about. The entrepreneurial role of the state was evoked to develop the industrial sector. तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा रोल शुरू कर दिया? The entrepreneurial role, जहां पर इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया है. कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी वर एंट्रस्टेड टू द पब्लिक सेक्टर. जो भी बड़ी बड़ी चीजें थी ये अगेन स्टेट्स को दे दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दे दी है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी वर हाई ग्रोथ रेट. सो ऑब्जेक्टिव क्या था? अच्छा ग्रोथ लेके आओ, अगेन सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, फॉरेन डोमिनेंस पे रिडक्शन कर दो, जो कि अभी आना शुरू हो गया वापस. बिल्डिंग अप ऑफ इंडिजिनस कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ. एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है पैसे का वो नॉर्मल कुछ लोगों में नहीं होना चाहिए. रिडक्शन ऑफ इनकम इक्वालिटीज, गरीबी और अमीरी के बीच में रिडक्शन होना चाहिए. कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी बाय स्टेट, और पूरी इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रोल और दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच दे वर ट्राइंग टू सी इन द सेकंड 5-year प्लान. The planners and the policy maker also suggested the need of using a wide variety of instrument like state allocation of investment. Government किस तरीके से investment allocation करेगी, that is also very important. Licensing and other regulatory controls to steer Indian industrial development on a closed economy basis. आप जिस तरीके से लाइसेंसिंग भी कर रहे हो कंपनीज को कुछ भी चीज बनाने के लिए, it has to be between a closed economy basis. You can't just open out. That's what the passage was talking about, or the second 5-year plan in the second paragraph was talking about. Moving on to paragraph 3. The strategy underlying the first 3 plans assumed. Now अब ये second के बाद 3 खत्म हो गया और उसके बाद आ गए हम लोग. वो बोल रहा है जो स्ट्रेटेजी थी पहले 3 ईयर प्लान की, इन्होंने क्या एज्यूम किया? दैट एक बार ग्रोथ आ जाए, द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वुड एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ट्रिकल डाउन टू द पुअर. एक बार अगर ग्रोथ आ जाएगी, हम इस ग्रोथ को अब पुअर तक भेजना शुरू कर देंगे, बिकॉज हमें एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी करना है. ठीक है, बट डाउट्स वर रेज्ड इन अर्ली 70s अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रिकल डाउन अप्रोच and its ability to banish poverty. So वो बोल रहा है though their approach was this, but doubts raise होना शुरू हो गए थे in early 70s. किस लिए? कि किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से poverty को banish करेंगे, remove करेंगे. Further, the growth itself generated by the planned approach it was too weak. पहली बात तो growth ज्यादा हुई नहीं कि वो इतना surplus इकट्ठा करें ताकि हम poor तक पहुंचा पाए. ठीक है,
पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग थे, स्टेट ने जो काम किया, वो अपने एक्सपेक्टेशंस में पूरे नहीं हो पाए, वो अपना इतना कैपिटल एक्यूमुलेट नहीं कर पाए और इनइक्वालिटी भी रिड्यूस नहीं किया, और इस वजह से एक शिफ्ट आया पॉलिसी के अंदर, और यहां पर आया 5th 5-year प्लान, और उसने करेक्ट करने की कोशिश की. इट करेक्टेड इट्स कोर्स बाय इनिशिएटिंग अ प्रोग्राम एम्फेसाइजिंग ग्रोथ विद रीडिस्ट्रीब्यूशन. यहां अगेन इन्होंने बात करी ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे to accelerate the process of production and to align with the contemporary realities. A mild version of economic realization was started in the mid 1980s. Now what they started off is कि भाई साहब ऐसे नहीं होगा, there should be a liberalization of economy at least in a milder way. Don't just open out, but धीरे धीरे लाइसेंस देना शुरू करो इंडस्ट्रीज को. That's what they started. And they have to align with the contemporary realities, because that's what the reality was, that you should take the help of private players as well. 3 important committees were set up, और यहां पर 3 important committees आई. पहला नरसिम्हन कमिटी on the shift from physical controls to fiscal controls. भैया फिजिकल कंट्रोल जो आप रिसोर्सेज दबा के बैठे हो छोड़ दो, आप कंट्रोल क्या करो, फिजिकल कंट्रोल. पैसा कहां एलोकेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट इज ओके, बट फिजिकल कंट्रोल करना शुरू करो. ये सारी इंडस्ट्रीज मैं ही चलाऊंगा. सेन गुप्ता कमेटी, इन्होंने क्या बोला पब्लिक सेक्टर में, और फिर हुसैन कमेटी ऑन ट्रेड पॉलिसी. सो सेन गुप्ता ने बोला पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, हुसैन कमेटी ने क्या बोला, ट्रेड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. द रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग वाज टू रीओरिएंट अवर इकोनॉमिक पॉलिसीज. हम हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को किस तरीके से रीओरिएंट कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट देयर वाज सम प्रोग्रेस, और यहां पर कुछ प्रोग्रेस होना शुरू हुई इन द डीरेगुलेशन. कुछ प्रोग्रेस, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट कुछ. क्या हुई, 2 kinds ऑफ डी लाइसेंसिंग एक्टिविटी टुक प्लेस. 2 तरीके की डी लाइसेंसिंग होना शुरू हुआ. क्या, पहला 32 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर डी लाइसेंस्ड which without were exempted from which were exempted from deregulation during the 1980s. So पहला चीज क्या होना शुरू हुआ कि 32 ग्रुप्स 32 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस करना शुरू किया. राइट, विच मीन्स अब आप अपने तरीके से काम करो, हम आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने अपने तरीके से काम करना चाहिए. 32 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, दैट वाज वन. सेकंड क्या हुआ, सेकंड ये हुआ कि second was, sorry for this, second was entry into the industrial sector was made easier. इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो एंट्री थी वो इजी हो गई, बट एग्जिट अभी भी दिक्कत हुई. एंट्री इजी हो गई, एग्जिट अभी भी सील्ड थी. सो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर एंट्री इजी कर रहे हो और एग्जिट हार्ड कर रहे हो तो भी लोग शायद नहीं आएंगे, बिकॉज दे शुड टेक द कॉल व्हेन टू एग्जिट एज वेल. बट स्टिल इट वाज अ गुड मूव, दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. Hence, the route of the liberalization program was started in the late 80s. So यहां से liberalization का route start होना शुरू हुआ when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. But उसका कितना reach हुआ, कितनी अच्छी तरीके से reform program शुरू हुए, ये बहुत limited था. There were political reasons on the same which could not be enhanced. और इन political reason में हम बाद में बात करेंगे, हम नहीं करेंगे. ये पैसेज यहां पर stop हो गया. ठीक है. So the passage was typically talking about where there was a problem, what was the plan, what was the objective, and for that objective there were some problems, and when there were problems, how the fifth plan, the 5th 5-year plan, if I'm not wrong, yeah, the 5th 5-year plan have tried to solve that particular problem. If not 100%, at least they started off taking the baby steps. That's what the passage was talking about. Moving on to the questions as far as this passage is concerned. Question number 1. The aim, what according to the passage was the aim of the Planning Commission of India? क्या aim था Planning Commission का? Right? ये हमें बताना, ये हमसे पूछा जा रहा है. Let's go to option number 1. Within a Republican state of governmental structure, it was an aim to reduce poverty, okay, stabilize the economy after independence. यहां पर उसने जो बात किया था, it was डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. उसने रिपब्लिकन की बात नहीं करी थी, उसने डेमोक्रेटिक की बात करी थी. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, दैट इज वन एलिमिनेटेड. सेकंड,
The aim was to construct a stabilizing economy with equal involvement for both private and social sector in India. That's what they talked about, private and public. ये सबसे इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल मेरा आंसर हो सकता है. The aim was to produce a mixed economy between B and C. Between B and C, यहां पर प्रॉब्लम क्या है सी के अंदर, स्टेबिलाइजिंग इकोनॉमी की बात नहीं हो रखी है. दैट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सी इज वेरी नैरो. एंड डी क्या बोल रहा है, द एम वाज टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. दैट इज एन एलियन ऑप्शन. अगेन कांट बी माय आंसर, सो आई विल मार्क ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर. इजी वन, इजी वन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Which of the following is true according to the passage? More of a fact-based question. More of a fact-based question. First, the correction was not evident in the fifth plan. Hello, it was. It was evident because they started taking the baby steps. So it was evident. यहीं से हटा दो, आगे पढ़ना ही नहीं है. Right? ठीक है? True पूछा गया है, not true नहीं. Second, the strategy of the fifth plan was that once the first two plans succeed, implementation of growth will be the poor section of the society. It was not the fifth plan, it was the third plan. It was the third plan. ठीक है? C, illogical institution situations were responsible for the lack of growth in agriculture. Yes, I think this is what it was given. Let's go. It was given in as far as agriculture is concerned. Here we go. Agricultural growth remained constrained by perverse institutional condition. So that is what it was given in the third paragraph. So that's why this is something which is the right answer. So none of the above. Basically, I don't have anything to explain. So answer to this question is option number 3. Okay. Moving on to the next question. Entry into the industrial sector was made easier, but exit still remained closed and sealed. Which of the following explain the particular sentences extracted from the passage? क्या चीजें वो बताएगा, वो आपको बताना था. Let's move to the options. Because of two kinds of delicensing industries made it difficult to new industries to enter the market. No, entry तो आराम से हो सकती है भाई साहब. आओगे हमारी मर्जी से, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से. ठीक है. Second, leaving a few industries, most industries were delicensed. सो बोल रहा है कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जहां पर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बोला था, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज को उन्होंने डीलाइसेंस कर दिया. मतलब आप अपने तरीके से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है. अब आए हो अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से. ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर हो सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. लीविंग असाइड अ फ्यू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैव गॉन डाउन रैपिडली. उप्स, छोड़ दो. The focus of the fifth planning commission was basically on the agriculture sector. छोड़ दो. So my answer is option number 2. My answer is option number 2. Pure logic, nothing else. Right? So with this, let's move to the last question. Which of the following? It was an inference-based question. Which of the following can be inferred from the given passage? The author is critical about planning commission since their inception till the end of Rajiv era. I don't know. I don't know. Alien option. End of Rajiv Gandhi era बताया नहीं था. The passage is critical about the economic policy of the government post independence. Okay, let's see. But that's I think too broad. But देख लेते हैं. The passages focus on the government aim to stabilize the economy post independence and the policies that were undertaken along with their demerits. A very complete answer for sure. A very complete option, right? बिल्कुल मेरा आंसर होगा because इसके अंदर demerit वाली चीज भी दे रखी है. Fourth, the passage throws light why after 70 years of independence India remain unprepared. Too much. So second is narrow. Second is too broad because economic policies of the government तुमने बहुत ज्यादा broad कर दिया है और इसीलिए C option should be the right answer. So this is something was the reason or all the solution of all the questions here in passage 3, that how and on what basis we are eliminating the options and coming up with the right answer. With this, let's move to the last passage, passage number 4, and then we'll move on to verbal ability. Okay, let's start.
So a sociologist Trimble and Madison point out in a survey paper published in 1966, many of the studies dealing with Native American in India, experiences have tend to focus on negative aspects and have characterized the Native American in a negative vein. Okay, so काफी ऐसी studies हैं, not all, many studies जो कि Native American के बारे में studies करती है, उनके experiences के बारे में, वो इनको negative way के अंदर present करते हैं. Prominent among these negative characterization is the contention that they have a low esteem. So what? So यहाँ पर बोला गया था they basically put them in a negative vein, and what exactly they try to they prove is that they have a low self esteem. ठीक है? Let's start. इससे क्या ego hurt हुआ है, and that's what the passage will talk about. ठीक है? In 1973, a small group of Native American professionals challenged ego hurt हुआ है. They challenged the accuracy of these negative reports. Their experiences suggested to them that most Native Americans viewed themselves positively. उनका खुद का experience ये था कि majority of them view themselves positively. After a series of discussion, तो ये उनका point था, ये इनका point था, discussion हुआ और discussion के बाद finally क्या निष्कर्ष निकला? They formulated a research task. Specifically, what would the self-image of the Native American be of it were researched by Native Americans. वो क्या बोल रहा है? क्या निष्कर्ष निकला कि they formulated a research task. क्या करेंगे उसके अंदर? What would the self-image of the Native American be if it were researched by Native Americans? अभी बाकी लोग कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, अगर वो खुद रिसर्च करेंगे तो क्या लगेगा, उसके ऊपर इन्होंने बात करना स्टार्ट किया. So what they discussed? In due course, an official research project was initiated. Project research शुरू हुआ. A crucial feature of the project was the formation of Native American Advisory Board. Ego इतना hurt हुआ कि सब कुछ शुरू हो गया. So it was a Native American Advisory Board which consists of community representative from different regions of the country, America. ठीक है? Because सब कुछ उन्हीं के बारे में करना था. One of the purpose of the advisory was to dispel any antagonism that might be there against the presence of social scientists in Native American communities. The idea to have this advisory board was कि कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए कि बाकी लोग ये ना बोले because क्योंकि तुम लोग ही थे तो भैया ये biased report होगी, इसलिए एक advisory committee करना शुरू कर दिया. In some of those communities, unfortunately, social scientists had come to be resented as predators merely using the Native American to further their own careers. अब यहां पर प्रॉब्लम एक आ गई, राइट? वो क्या था कि सोशल साइंटिस्ट उनको किस तरीके से दिखाया गया? प्रीडेटर्स मियर, या वो किस लिए आ रहे थे? प्रीडेटर्स मियरली यूजिंग द नेटिव अमेरिकन टू फर्दर देयर ओन करियर्स. वो इस चीज के ऊपर इसीलिए आए क्योंकि उन्हें नेटिव अमेरिकन के इस डिस्कशन में आना था ताकि वो अपने करियर्स को और भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए. This was very unfortunate. बाकी सब कुछ अच्छा था as per the passage. Another important function of the advisory board was assistance in identifying trained Native American interviewers for data collection. So ये बहुत important चीज थी because अगर ये fail हो जाएगा तो पूरा इनका जो भी research है वो fail होने की chances हैं. The ideas of using local resident as interviewers were rejected earlier since it was felt that respondents might be concerned. यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने क्या बोला? लोकल रेजिडेंट को नहीं लेते बिकॉज अगर लोकल रेजिडेंट्स को इस रिसर्च में डालेंगे सो प्रॉब्लम ये हो सकती है. क्यों, किस लिए, राइट? कुछ देयर मे बी देयर मे बी लड़ाई झगड़े कुछ भी हो सकते हैं. सो लेट्स नॉट डू दैट. ठीक है? हाउएवर, नीडलेसली दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन माइट इवेंचुअली टर्न इनटू कम्युनिटी गॉसिप, और ये शायद एक कम्युनिटी गॉसिप का हिस्सा भी हो सकती है. The board opted for selection of culturally sensitive non-resident as interviewers. हमने उनको लिया जो कि non-resident थे और वो culturally sensitive भी थे. The board also had hand in shaping the survey questionnaire to be used. तो questionnaire भी इन्होंने use किया. Since time constraint थे, it was impossible to devise a questionnaire that would have been sensitive to the full diversity of many distinct Native American groups or tribes. A compromise solution had to be settled down on that would tap communities, particularly Native Americans. So इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं बना पाए बिकॉज टाइम कम था. किस लिए टाइम कम था? अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. बट स्टिल दे हैव अ डिसेंट क्वेश्चन फॉर श्योर. फाइनली अ टोटल ऑफ 792
Native Americans in range from 17 to 80 and representing over 15 tribal and Alaska Native groups were constructed, administered through a 309-page questionnaire. Shit, man. 109 respondents also completed open-ended interviews. Questionnaire items clustered around 38 subscales that yielded indices of self-regard, values, philosophy, locus of control, satisfaction. Items contained in the interview served a valid questionnaire responses, blah, 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 blah. Okay, done. So, last passage. If there is any question related to last passage, I'll come to the last paragraph. If there is some question related to the last paragraph, I'll come to the paragraph and solve. Because it is more of information which is not needed, right? My whole thing is very clear in paragraph number 1 and 2. That's it. Okay? Moving on to the questions, right? Questions क्या बोल रहा है? Let's move to question number 1. The primary purpose, primary purpose ने एकदम हालत खराब कर दी. The primary purpose of the passage is to do what, right? Present a piece of research on Native Americans as a model for other researchers to evaluate, ताकि वो इसको cover कर पाए, देख पाए, नकल कर पाए. No, not at all. That's what not the purpose was all about. Describe some of the background, method and result of the study of Native American self-regard. Yes, self-regard, a very important piece of information in option number 2. Analyze the efficacy of advisory boards in social sciences research. Too broad. It was not only to analyze the efficacy. Contrast the questionnaire method. No one is doing that, and that's why very easy one, option number B, right? And that's what I felt, at least in this question, that some good options can be framed, right? Okay, let's move to the next question. Question number 14. According to the passage, hostility towards social scientists in some Native American communities resulted from communities' perception that, वो बोल रहा है ये hostility जो arise हुई towards social scientists, क्या बोला था उन्होंने? Predators, जो अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं. उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि कैसे हुआ, क्या परसेप्शन से क्या हुआ वो बताइए, right? And if let's say if I talk about all the options, the only option which was given is option number D. और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, because it was more of a fact based question, guys. It was more of a fact based question directly given. अगर आप अच्छी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ते तो शायद आपको पैसेज में जाने की भी जरूरत नहीं थी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It can be inferred from the passage that those designing the study wished to ensure that, right? जो स्टडी को डिजाइन कर रहे थे वो क्या चाहते थे? The identity of those completing open-ended interviews was made publicly known in advance. No, not at all. No respondents were selected from communities known to have been hostile to social scientists. I don't know. Data collection was carried out by interviewers through well versed in a sociological theory. I don't know. ठीक है. The confidentiality of any information gained would be protected to the respondent satisfaction. So they were more concerned by that वो gossip का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. वो gossip का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने local residents भी नहीं लिए, and that's why option number D. Clear? Moving on to the last question of reading comprehension. Which of the following is the probable source of the passage? Probable source क्या हो सकता है passage का? Biology, anthropology, based on cultural studies, a feature from weekly magazine. So I will say not this, and between let's say B and C अगर आपको कुछ भी problem थी, anthropology will be too broad, and that's why it is a research article on cultural studies, because it was research article. We are talking about research. That's what the passage was talking about, right? So with this, we are moving to verbal ability section and coming into an end of reading comprehension. I hope all the questions, all the doubts, all the queries are clear. अगर फिर भी कुछ डाउट क्वेरीज वगैरह कुछ है, आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, नहीं तो मैं लास्ट के अंदर मेरे पीपीटी के अंदर देके जाऊंगा. यू कैन गेट इन टच विद मी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर पैरा जंबल which was slightly I think. अच्छा, बाय द वे, चलो ये मैंने एनालिसिस के अंदर काफी कुछ चीजें डिस्कशन कर चुका हूं, सो लेट्स नॉट रिपीट इट अगेन. लेट्स कीप दिस थिंग सॉल्व करते हैं. Okay, so the structure here is, so the answer here indeed was A, B, C, D.
ठीक है. ओके. सो लेट्स डिस्कस कुछ कुछ चीजें हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं. क्यों, क्या, कैसे, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, उस चीजों पे जाते हैं. लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस वन बाय वन. Though Fitzgerald did not join in the imperial venture, he did not join in the imperial venture, though he didn't do that, and indeed hardly left England, his translation from Persian and other languages depended on the web of contacts the empire established and thrived on the knowledge gained from its commercial and political ambitions. Right? So, though he didn't do that, but still his all the translation are dependent on the empire did some XYZ thing. Option 2. As Edward said, pointed out, such interest-directed scholarship, the interest-directed scholarship, however detached the scholars themselves from the profit of imperialism. Now, the clue here was, first of all, B can't be my starting line because बी के अंदर यहां पर कुछ इंटरेस्ट की बात कर रखा है, सच इंटरेस्ट. दे आर टॉकिंग अबाउट सच इंटरेस्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज, एज आई ऑलवेज से दैट अमंग द फोर ऑप्शंस you have to choose the subject line, that the four options are revolving around a certain subject line, and here it was Fitzgerald. यहां पर बात हो रखी थी. उसके बाद अगेन वो बात कर रहा था how they moved with, मैं आगे सेंटेंसेस को पढ़ूंगा. अगेन ये फिट्जगेराल्ड की बात कर रहा था. देन हियर आल्सो दे टॉक्ड अबाउट इंपीरियलिज्म इन द केस ऑफ फिट्जगेराल्ड व्हिच वाज गिवन हियर. सो द ब्रॉड लाइन, यहां से कुछ क्लू मिल जाएगा, बट ठीक है, दैट्स ओके. सो यहां बोल रहा था सच इंटरेस्ट, राइट. वो इंटरेस्ट की बात कर रहा था. दैट इज पॉइंट नंबर 1. एंड द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लू वेयर इन ए एंड बी बिकम्स माय मैंडेटरी पेयर वाज बिकॉज ए के अंदर वी आर मेंशनिंग अबाउट though he did not join in the imperial venture, though he didn't join blah 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 stuff. और यहां क्या बोल रहा था, कितना भी आप डिटैच्ड हो जाओ, कितना भी आप डिटैच्ड हो जाओ, ठीक है, however detached the scholars themselves from the profit of imperialism, the interest directed scholarships जो है वो तो तुम्हारा रहता ही रहता है. So there is an interest directed scholarship, तुम कितना भी डिटैच्ड हो जाओ. So as I always say, an argument followed up by counter argument. An argument followed by counter argument. He did not join the imperialism venture and indeed hardly left England, all those stuff. And then he pointed out that such interest, कौन से interest directed scholarships की बात कर रहा है? So these are interest directed scholarships. However detached from the imperial scholar themselves, the imperial scholar कितना भी मना कर दे, वो या वो होगा ही होगा. So my AB becomes the mandatory pair from here. ठीक है. CD again was very much evident as far as mandatory pair is concerned. क्यों? वो यहाँ पर क्या बोल रहा था? Archaeologists, linguistic, scientists and geographers moved along with the armies of soldiers and civil servants as the British and the French entrenched their rules in the Middle East. ठीक है? और यहाँ पर क्या बोल रहा था? यहाँ पर he expressed his unease at British ambition abroad. Right? So वो यहाँ पर पहले बात कर रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं एंट्रेचिंग, हमारा रूल एक्सटेंड करना इन द मिडल ईस्ट. और यहां पर फिट्जगेराल्ड हु टेम्परेरली श्रैंक फ्रॉम द पावर एंड द पावरफुल प्लेड नो डायरेक्ट पार्ट इन दिस. किसमें? इसमें. और वो कैसे पता लग रहा है? बिकॉज ही एक्सप्रेस्ड हिज अनईज एट ब्रिटिश एम्बिशंस अब्रॉड. सो यहां पर वो ब्रिटिश के एम्बिशंस हैं अब्रॉड के अंदर, और यहां पर वो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहा है. सो माई सी डी बिकम्स द मैंडेटरी पेयर. सो माई ए बी बिकम्स द मैंडेटरी पेयर वेर वी आर टॉकिंग अबाउट इंपीरियलिज्म एंड ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट देन द इंटरेस्ट डायरेक्टेड स्कॉलरशिप. एंड यहां पर हम सीओडी की बात कर रहे हैं कि उनका रूल जो मिडिल ईस्ट में एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, फिट्जगेराल्ड उसके रोल में नहीं था बिकॉज he was not happy with all those things. He was uneasy at that. Now the real challenge was कि हम ए बी और सी डी के अंदर उसको किस तरीके से फॉलो करें, राइट. और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो, राइट. हमें किस तरीके से मूव होना है? वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्रॉड सेंटेंस एंड वी हैव टू मूव टू नैरो. ठीक है. अब आप देखिए यहां पर उसने क्या बोला? हु टेम्परामेंटली श्रैंक फ्रॉम पावर एंड द पावरफुल. ठीक है. ऊपर उससे क्या बोला था?
Here we are talking about commercial and political ambitions. So यहां पर वो बात कर रहा था अपने political ambitions की, किस तरीके से उसने थ्राइव किया ऑन द नॉलेज ही गेन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल एम्बिशंस, ये सारी चीजें आ रही थी। और धीरे धीरे उसने एम्पीरियलिज्म के अंदर एडवर्ड सैड अंकल ने क्या बोला, उसके बाद वो बोल रहा है ब्रिटिश आर्मी जैसे बाहर बाहर जाना शुरू हो गई, दे एंट्रेंच देयर रूल, और लास्ट के अंदर आया दैट ही वाज एट अनईज फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो, देयर वर पॉलिटिकल एम्बिशंस टू डू समथिंग, एंड ग्रेजुअली वो क्या बोल रहा है, ही टेम्परामेंटली श्रैंक फ्रॉम पावर एंड द पावरफुल। तो यहां जो वो यूज कर रहा था अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस, उससे वो वहां से श्रैंक हो गया। सो दैट्स व्हाई विल मार्क ए बी सी एंड डी एज एन आंसर, बिकॉज अच्छा डी पहले नहीं आएगा, सी पहले नहीं आएगा, बिकॉज पहले मैं इनकी बात तो करूंगा, पहले आई टॉक अबाउट फिट्जगेराल्ड अंकल, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑल अबाउट, then we'll move on to the counter argument, and then I'll talk about the British Empire, and then we are talking about the British Empire का ambition. So पहले the subject line or the broad line was Fitzgerald, and that's where I want to like to start the sentence from. So मैं हमेशा बोलता हूँ 4 sentences एक सब्जेक्ट लाइन से शुरू होंगे, आइडेंटिफाई द ब्रॉड लाइन और द सब्जेक्ट लाइन, कि ये चारों सेंटेंस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो मुझे फर्स्ट थर्ड फोर्थ साफ पता लग रहा था, इट वाज टॉकिंग अबाउट फिट्जगेराल्ड, एंड दैट्स हाउ आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर ए, राइट। और बिटवीन ए एंड बी वी वर वेरी क्लियर कि ए एंड बी के अंदर पहले आई विल टॉक अबाउट एन आर्ग्यूमेंट एंड देन फॉलोड बाय काउंटर आर्ग्यूमेंट, एंड सिमिलरली वी विल मेक मैंडेटरी पेयर दैट पहले हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के एम्बिशन की बात कर रहे थे, और उस एम्बिशन से ये जो फिट्जगेराल्ड थे ही वाज एट एन ईज, एंड दैट्स व्हाई ए बी सी डी शुड बी द सीक्वेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ you need to solve the parajumble. Let's move to the next. Okay, so this was comparatively easier parajumble as compared to the first one, ठीक है। Again time भी थोड़ा कम लगता है शायद, because sentences were also very short. Indian employers and recruiters have a large number of vacancies for high skilled positions, and according to a recent survey, so there is some recent survey, and उस सर्वे के हिसाब से इंडियन एम्प्लॉयर्स जो हैं और रिक्रूटर्स जो हैं, उनके पास वैकेंसीज है किसकी, हाई स्किल्ड पोजीशंस की। Randstad, India's latest global work monitor survey released on Wednesday indicates that 65% employers have trouble finding highly qualified people. With over 5,000 employees interviewed, this number is much higher than the global average of 48%. Okay, and then we are talking about the help wanted sign has now officially made way for the qualified help only. Okay, so let's start guys. So हम लोग हमेशा बोल रहे हैं that we'll move on from broad to narrow, we'll follow a inverted pyramid structure, that's what we are referring to, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं, along with that the mandatory pairs, the relationship, everything will come into picture, ठीक है। We are talking about Indian employers and recruiters have large number of vacancies of for high skilled positions according to the survey. There is some survey happening, ठीक है। Okay, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं Randstad, India's latest global work, ठीक है। With over 5,000 employees interviewed, कुछ पेयर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। With over 5,000 employees interviewed, so there is some interview which is happening. So there is some interview which is happening. So among the 4 options, the interview is happening. जहां हम बात कर रहे हैं, there is a vacancy for high skilled position. There is a vacancy for high skilled position, और very importantly जो हम बात कर रहे हैं, 65% employers have trouble finding highly qualified people. Right? They have a trouble finding highly qualified people. ठीक है। और यहां पर वो क्या बोल रहा है, अगर आप देखोगे, विद ओवर 5,000 एम्प्लॉइज इंटरव्यूड, दिस नंबर इज मच हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 500%, राइट। सो यहां मेरे को कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मैं अभी कुछ पेयर नहीं बना रहा हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉब्लम कहां पर है, ब्रॉड सेंटेंस कहां है। हम लोग बात कर रहे हैं पहले कि अब हमें हेल्प वांटेड नहीं चाहिए, हमें क्वालिफाइड हेल्प चाहिए। मैंने क्या बोला था, चारों सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर, चारों सेंटेंसेस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड हेल्प, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई स्किल पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई क्वालिफाइड पीपल, एंड देन इट इज सम
some I would say explanation of any of these three option given. ठीक है, so we are talking about qualified. अब ये दोनों में क्या है, सर्वे और सर्वे है. सो इन सर्वे से पहले मैं भूमिका बांधूंगा. Context I will set, and the context is we are talking about this. So my broad line is option number 4, setting the context, and the context which says is that help voltage sign का मतलब अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, we need qualified people. So that's what my starting line is all about. That's what my starting line is all about, the broadest line possible. ठीक है, इसके बाद अगेन छोटा सा ब्रॉड, थोड़ा और उसके लेवल पे जाएंगे. हम लोग बात करेंगे इंडियन एम्प्लॉयर्स की पहले या फिर रेंटस्टेड इंडिया की पहले. नहीं सर, पहले हम पूरे एम्प्लॉयर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम रेंटस्टेड इंडिया पे आएंगे. ठीक है, सो पूरे एम्प्लॉयर्स की हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 में. वहां पर वो बात कर रहा है इंडियन एम्प्लॉयर्स की, वहां वो बात कर रहा है इंडियन एम्प्लॉयर्स की. वैकेंसीज बहुत है यहां, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, 1 उसको एक्सप्लेन कर रहा है. सो 1 इज एक्सप्लेनिंग किसको, 4th को. कैसे, दैट वी हैव नाउ ऑफिशियली मेड फॉर क्वालिफाइड हेल्प, हमारे पास बहुत वैकेंसीज हैं इसके लिए. सो माय 1 इज एक्सप्लेनिंग 4th. अब इसके बाद रेंटस्टेड इंडिया आ जाएगी, वो इसको फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, वो इसको फर्दर एक्सटेंड करेगा. जो हमेशा बात करते हैं वो इसी आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड कर रहा है. कैसे एक्सटेंड कर रहा है कि भैया इन्होंने एक सर्वे निकाला और उन्होंने क्या बोला, 65% एम्प्लॉयर्स, इंडियन एम्प्लॉयर्स. इसको और नैरो किसने कर दिया, 65% एम्प्लॉयर्स को भैया बहुत ही ट्रबल है. और उसके बाद हम इन नंबर्स की बात करेंगे. सो इट्स माय 4 1 2 3 should be the sequence, right? So this is the approach. It was an easiest one, to be honest with you, and this is how you need to approach any given parajumble as far as CAT is concerned, or as far as parajumble is concerned. Moving on to the next, odd sentence parajumbles. Both the odd sentence parajumbles, to be honest with you, they were, yes, I accept, thoda bahut they were trickier when it compared to the other set of questions in verbal ability. So let's talk about this particular odd sentence. A broken will. A broken will is worse misfortune than a broken back. It is only a strong, unbroken, persistent will. Okay. That is adequate to achieve self-mastery and mastery of the difficulties of life. In the latter case, the man is physically crippled. In the former, he is morally crippled. Okay. Later case कहीं पर आ रहा होगा, देखते हैं. He is physically crippled, और मेरे ख्याल से it is like this. ठीक है, later case के अंदर it is physically crippled, former के अंदर he is morally crippled. For sure 1 and 3 becomes my mandatory pair. For sure 1 and 3 becomes my mandatory pair. Nor is there much difficulty in lending even a very strong-willed and obstinate child to give up his own way under extraordinary circumstances. Okay, fine. The effort to break the child will has long been recognized as a disaster by all educators. Very broad line. ठीक है. Okay, so guys, we are talking about broken will. We are talking about broken will. हम लोग यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहां पर वो क्या बोल रहा था, यहां पर वो बात कर रहा है, पहली बात स्ट्रॉन्ग विल्ड की बात कर रहा है. हम सब में ब्रोकन विल्ड की बात कर रहे हैं. दैट वाज एन इजीएस्ट थिंग. ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट आंसर, नथिंग एल्स. दूसरा, यहां पर बात कर रहा है डिफिकल्टी इन लीडिंग अ ब्रोकन स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड. वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट. So that's why option number 4 is your odd sentence here in this particular question. Okay, here if I talk about in this particular question, there are so many opportunities to do good for the planet, and many of them are right under your nose. ठीक है, there are many opportunities. आप कई चीजें एकदम सीधा कर सकते हैं. It's there, you can see directly, right? You need to take those steps. A great way to do this is to reduce your dependence on fuel resources that have a negative effect on the environment. Think your actions don't make a difference. Think again. My starting line probably right कि आप काफी कुछ चीजें कर सकते हैं. Each morning is the beginning of new day and another chance to make the world a better place.
taking small mindful action of positive. So everywhere we are talking about, think about it. आप छोटे छोटे स्टेप उठा सकते हो, एनवायरमेंट को सीधा कर सकते हो, ये सब चीजें दे रखा है. हालांकि मैंने डिटेल सॉल्यूशन के अंदर आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस वगैरह सब कुछ बता रखा है. सो जस्ट फॉर द पॉजिटिव ऑफ टाइम वी वांट टू मूव फर्दर. सो यहां पर अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन जो है वहां पर वो बोल रहा है डिपेंडेंसी ऑफ द फ्यूल रिसोर्सेज. दैट्स नॉट अ वेरी स्मॉल ऑप्शन. Right? यहाँ पर you need help from organizations, you need help from countries, you need policy initiatives, you need some policies, restructuring. That can't be small thing when we are talking about dependency on the fuel sources, right? Because fuel is too broad. यहाँ पर वो पेट्रोल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? So that's why first, third, fourth, fifth are in sync with what we can do, taking the small baby steps rather than option number 2, which is the answer to this particular question, and the reason is what just I mentioned here. Okay, so let's start with the third para jumble. It was an easy one, right? To be honest with you, and let's see. Let's make again the broad to narrow kind of a structure. That how we can move from broad to the narrow one. कैसे होगा, क्या होगा? Let's see. So first of all, a very important clue and a very easy one to be very honest with you. That FDR का पूरा नाम जो दे रखा था, that was given in Franklin D. Roosevelt. So मेरा first जो है मेरा intro नहीं होगा. For sure, my first can't be the introduction for sure. Now, why they have even mentioned about FDR? Because they were talking about examples of leadership, right? And of different varieties at different levels in different fields. So again, it was more of an example. So again, it can't be my intro line for sure. And then we are talking about the power of government and the conventional economic policies that have been insufficient to stop the rush of depositors to withdraw their savings, blah, blah, blah. And then they are talking about American financial institutions. It was very evident that they are talking about something talking about the banking crisis of American history. It's explaining this. So I would like to start this thing with the third, because third is talking about examples. Moving on, इसका example का explanation दिया उसके अंदर 2 के अंदर in the form of they talked about on assuming of office what FDR done, and then इसको explain किया 4th के अंदर that what is this worst banking crisis. ये worst banking crisis was all about, that was this, and first के अंदर that how he came up or what all things which he did. So that's what he has done in option number 1. So 3, 2, 4, 1 are easiest para jumble, and you need to hunt the questions like this, and you will find these kind of questions in CAT as well. So don't think that कि CAT के अंदर इतने easy questions नहीं आते हैं. Yes, CAT के अंदर भी easy questions आ सकते हैं. So just ensure that you don't have that notion in mind कि CAT के अंदर ऐसे easy questions आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है? Then moving on to the next question. Now we are coming up to the 3 para summary questions. That's what we are doing now. Para summary questions again, as I say कि पैरा जमरी के अंदर प्रॉब्लम कहां पर है कि हम लोग थोड़ा इनकम्प्लीट ऑप्शंस को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट्स सी. Darker Indians, they face discrimination by other Indians as demonstrated through lower incomes, less education, lack of access to coveted government positions. So we are talking about darker Indians, they face discrimination. Let's mark out the keywords. Okay, and that is due to the coveted government positions. Okay, they are very much responsible for this. Due largely in part to the intersection of gender, color and caste, they have fewer available opportunities. So we are talking about fewer available opportunities. For example, the outcast groups of Dalits are racialized as black and have limited access to occupational factors. As a result, Dalit are often relegated to unwanted professions, including waste management, toilet cleaning, prostitution, servants to the middle and upper classes. The stratification of Indian society by caste, class, religion, gender, and particular color are detrimental to India as a whole, or Indians as a whole. As individuals and as an emerging nation, these taxonomies promote the creeds of colonialism, very good, okay, and Western imperialism, which preserves power and wealth in the hands of the elite, who in turn maintain dominance through continued oppression of the masses. So the keywords I have mentioned here clearly. We are talking about darker Indians faces discrimination due to government coveted positions. They have a fewer available opportunities. They are detrimental to India as a whole and as an emerging nation. And it is a creed of colonialism and Western imperialism which we are facing. These are the keywords. We'll not take any example as keywords. Let's move on to the options here. The practice of racialized discrimination in India, along with several other factors, impedes India's growth, okay, emerging nation, fine.
by subverting the underprivileged class, and that's what they are talking about, the fewer available opportunities. हो सकता है मेरा आंसर. Let's go to option number 2. The Indian society, marked by different discriminatory factors, continues to practice the oppression of the have-nots by the haves. यहां पर अगर तुम बात करोगे, वो बोल रहा है क्या? Practice the oppression. So oppression की बात is given here. So it becomes too narrow. That's point number 1. ठीक है. Second, ठीक है. और यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का ग्रोथ भी सबवर्टिंग की बात कर रहा है. दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग हियर. थर्ड, इंडिया डिस्पाइट ईयर्स ऑफ फ्रीडम फॉर कॉलोनियलिज्म स्टिल प्रैक्टिसेस द वेस्टर्न इंपीरियलिस्टिक प्रैक्टिस. उप्स, ठीक है. एंड दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर बाय द रिच. वहां पर वो क्या बोल रहा है? डार्कर इंडियंस, एंड डार्कर इंडियंस को उसने हर तरीके से दे रखा है. लोअर इनकम, लेस एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सेस. अगेन दैट्स टू नैरो हियर. Fourth, the practice of racialized discrimination in India, along with several other such factors, is detrimental to India's factor. So, along with other factors is missing because we are talking about different form of discrimination. We are talking about different forms of discrimination. यहाँ पर वो बोल रहा है several other factors, and that's why I will mark option number 1 as the right answer. That's why I will talk about option number 1. In fact, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सेकंड के अंदर भी different discriminatory factors. We are only talking about racialized discrimination. So that's why no second, no 3, no 4 will mark option number 1 as the right answer. So identify the keywords, eliminate the options. On the basis of keywords, you will have your answer for sure. Let's move on to the next one. Peace or harmony between the sexes and individual does not necessarily depend on a superficial equalization of human beings, nor does so. Okay, peace and harmony not necessarily depends. It depends, but not necessarily on superficial equalization. Nor does it call for elimination of individual traits and peculiarities. Okay, nor does it is elimination of this. Okay. The problem that confront us today, that's what the main idea they're talking about, and which the nearest future is to solve. Main problem क्या है? Is how to be oneself yet in oneness with others. दूसरों के साथ मिलजुल के रहो, along with कि खुद की भी आइडेंटिटी बनाए रखो. To feel deeply with all human beings, सबसे बनाए रखो, and still retain one's own characteristics. This seems to me to be the basis upon which the masses and the individual, the true democrat and the true individuality, men and women can meet without antagonism and opposition. The motto should not be forgive one another, rather understand one another. वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक ही था, खुद की आइडेंटिटी बनाए रखो, दूसरों के साथ जुड़े रहो. इसके ऊपर मुझे आंसर मार्क करना है. लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 1. रादर देन द जेंडर इक्वली, what is more important in obtaining peace is being in alliance with the society and comprehending others without losing oneself. Okay, यहां पर एक प्रॉब्लम क्या थी जो बोल सकता हूं, राइट? द रादर देन जेंडर इक्वली मोर इंपॉर्टेंट क्या है? तुमने इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया है. तुमने इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया है बिकॉज उसके अंदर उसने बोला है कि भैया, अच्छा पहली बात, नॉट एक्सट्रीम छोड़ दो, जेंडर इक्वली की कहीं पर बात ही नहीं हो रही. जेंडर इक्वली की कहीं पर बात नहीं हो रही है. इज इट गिवन एनीवेयर? ओके, लेट्स गो टू द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. 1 क्या बोल रहा है? रादर देन जेंडर इक्वली, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन ऑब्टेनिंग पीस इज बीइंग इन अलायंस विद द सोसाइटी एंड कॉम्प्रिहेंडिंग अदर्स विदाउट लूजिंग वन सेल्फ. यहां पर प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्रिहेंडिंग अदर्स. मुझे ऐसा लग रहा है, आगे देखते हैं. फॉर एंश्योरिंग इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स, one should ensure a good level of accepting and understanding the other people. यहां पर oneness की चीज मिसिंग है, तो इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन एलिमिनेटेड. थर्ड, the best way to ensure peace is to excuse the other person. Gender equality excuse कर दो, but the motto should not be this. Okay, gender equality and comprehending others are both okay. Very good, fine. So the best way to ensure the peace is to
excuse the other person. Gender equality and comprehending others are both secondary. Okay. Being yourself and keeping all your traits alive is one of the most important to ensure peace and harmony. So यहां पर ये हटा दो, यहां पर ये हटा दो. So फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा ऑल से हट जाएगा, पहला ऑप्शन तुम्हारा एलियन से हट जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड तुम्हारा राइट आंसर होगा. Why? Because the best way to ensure peace is to excuse the other person. आप उसको excuse कर दो, and gender equality and comprehending others are both secondary. आप जो है यहां क्या लिखा हुआ है, rather one another, rather understand one another, right? The motto should not be forgive one another, rather understand one another. आपको so in option 3 what it is written is the motto should not be forgive one another, rather understand one another. और मतलब आप जो है यहां पर forgive मत करो, understand करो. और तुम्हारा यहां पर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द बेस्ट वे टू एंश्योर पीस इज टू एक्सक्यूज द अदर पर्सन. आप उसको एक्सक्यूज करो, उसको छोड़ो. ठीक है. जेंडर इक्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंडिंग अदर्स सेकेंडरी है. फॉरगिव मत करो, उसको एक्सक्यूज करो. सो इसका मतलब क्या है, उसको अंडरस्टैंड करो. एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर? सो दैट्स हाउ विल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर all the other options, first, second and fourth, and we'll come up with option number 3 is the right answer. Moving on to the next and the last one probably. Yes, and the last one. Prediction, the hallmark of natural sciences, appears to have been possible by reducing phenomena to mathematical expressions. वो बोल रहा है prediction जो है, जो कि natural sciences का hallmark है, वो have been possible by reducing phenomena to mathematical expression. क्यों प्रिडिक्शन कर पाते हैं? बिकॉज हम उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक लिमिटेड कर पाते हैं. सम सोशल साइंटिस्ट ऑल्सो वांट द पावर टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली एंड एज्यूम दे ऑट टू परफॉर्म द सेम रिडक्शन. सोशल साइंटिस्ट भी ऐसा करना चाहते हैं, बट दिस वुड बी अ मिस्टेक बिकॉज आप उस डेटा को नेग्लेक्ट कर रहे हो. इट वुड नेग्लेक्ट डेटा दैट आर नॉट इजीली मैथमेटाइज्ड and thereby would only distort the social phenomena. तो आप हर चीज को नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ उन्हीं चीज को प्रिडिक्ट कर पाओगे जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिड्यूस हो सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर 1. द सोशल साइंसेज डू नॉट हैव एज मच पावर एज द नेचुरल साइंसेज. ओके, देयर इज अ नीड. ओके, सबसे पहले ये हटा दो, देयर इज अ नीड. थर्ड, phenomena in the social sciences should not be reduced to mathematical formula. प्रिडिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस. नो. तो सक्सेस और नीड ये दोनों दो एक्सट्रीम वर्ड्स हो गए हैं. मेरा फोर्थ चला गया, मेरा सेकंड चला गया. आई एम लेफ्ट विद टू ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड. यहां से मुझे ये नहीं पता लग रहा है, इट डू नॉट हैव द मच प्रिडिक्टिव पावर, राइट. बट ये जरूर पता लग रहा है कि हमें यूज नहीं करना चाहिए. शुड नॉट बी रिड्यूस टू मैथमेटिकल फॉर्मूलाज. क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप उन चीजों को नेग्लेक्ट कर लोगे जो कि मैथमेटाइज नहीं हो सकते हैं. इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट आंसर. राइट. सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव सॉल्व्ड कंप्लीट VARC section of mock 1 with all the reasoning, with all the elimination process, what we have discussed in the live classes. I hope it is in sync with what we were doing in the classes. अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी कंसर्न है, यू कैन गेट इन टच विद मी. राइट. तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरा रीजनिंग फॉर एनी अदर पर्टिकुलर ऑप्शन इज राइट, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दीज डिटेल्स. सो for those who don't know me, my name is Prashant, one of the co-founder with Ekoching. This is my email ID, prashant@ekoching.com. This is my mobile number, it's 9979848380, and this is my Telegram group. In this Telegram group, you can get all the articles to read, all the editorials to read, daily newspaper, and you can interact with us for all the CAT related discussion. So this is the Telegram link. You can reach out to us with this as well. So with this, I am coming to an end of this particular video. We'll come up with more mock, more analysis, more solutions like this in the months to come. Stay tuned with Ekoching. Thank you.